Hello my dear students, now we will go for the part which is totally practical based in current electricity. One, we have read the meter bridge and use of meter bridge to determine the unknown resistance of a wire. I have shown you the meter bridge instrument, galvanometer, what type of galvanometer you use in the laboratories, and that experimental arrangement and what is the purpose of that experiment, and also some numericals over this one. Now this is also an important case. In various examinations you are getting, though this is included here after 2018 in your syllabus, but it was earlier in CBSE syllabus and plenty questions has been asked in different examinations. So potentiometer basically is a very important instrument used in electrical arrangement for what actually? To measure the potential difference. The name indicates potentiometer. You can see this heading, potentiometer, and its principle will read today. If you understand the principle, the very simple formula constituting only three symbols we can say. Jemti Ohm's law is good here. Similarly, there is a formula constituting three symbols which will be utilized in many experiments to find out the different factors in the lab also, laboratories. Laboratories. Now first you should go step by step. Again I am telling you, you should be very clear about the basic concept of this instrument. देखिया को तो एमती बहुत बड़ा टेबल रे थुआ ही थीबा, but experiment is very simple if you know the concept of this experiment, you can say. See, now we will see potentiometer. As its name indicates, potentiometer. Meter is a measuring device. See, earlier you are telling galvanometer, you are telling the voltmeter, you are telling the ammeter, you are telling the ohm meter, resistance मापिया पाई, ohm meter, voltmeter, ammeter, ordinary scale you are telling is a meter scale. So meter is actually a measuring device. Now potentiometer is an instrument in which you can measure the potential difference or EMF of a battery, you can say. बैटेरी रा सब डिटेल्स एथरे मापी हबो और एनी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करी हबो रेदर देन द वोल्टमीटर यू आर यूजिंग इन द लैब. लेटर ऑन आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, रिमेंबर. नाउ एज इट नेम इंडिकेट्स पोटेंशियोमीटर, so first we will see what is that instrument. Remember, that is an instrument, actually this is an instrument used to measure potential difference, potential difference, also plus various factors. We'll read for other purposes also it is used. It is a versatile instrument, but generally voltage measurement करुची बोली ताना पोटेंशियोमीटर दिया है. लेट अस सी हाउ इट विल मेजर. गोटे सिंपल फॉर्मूला हबो दैट विल बी अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्सपेरिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन. नाउ सी द इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट. लेट मी डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट, देन विल गो फॉर द यूज. This, you see this diagram here, the diagram I have used the black pen, red pen, and blue lines. You say blue line, blue, black and red, and different colors are used for distinguishing the different factors. It is a very natural process. See, nature creates us. So our skin is one color, the head is one color, okay, teeth is one color, so different colors are there. Though a human being, nature creates with different colors to distinguish these things. That's why here in my diagram I have taken say black line. You see, ये जो black टा देखुच आज ओडिया भी यूज कर भी बहुत मु तो black जो देखुच black line इटा potentiometer. Then I have shown you the meter bridge. In meter bridge you are having this copper strip. Copper is a good conductor. It is used generally for connection purpose. इटा connection पे यूज होउची. But here there is a 1 meter where there is a scale, there is a board, गोटिए तार अच्छी 100 centimeter गोटिए तार. Potentiometer रे more than one wires, minimum 4 wires, each of 100 centimeter or 1 meter we can say. You can see this is the potentiometer. I will take that also into that considerations. देखी पारछ पोटेंशियोमीटर देखा तो होची तुमको भाबुची देखा होथो. आर यू एबल टू सी दिस वन? हाँ, बड़ा देखा ठीक देखा. You can see here. Now here this is a scale, this is a board,
आदर किसी ना बोर्डटा सनमाइका दिखाई खाली भल दिशियापाई एमती काठ बोर्ड रे भी अच्छी ये बोर्ड रे किसी मान्य ना स्केल इज देयर एंड यू सी 1 2 3 4 5 6 potentiometer are available with 4 wires 6 wires and 10 wires. So I have written in notes 4 to 10 wires. जिते wires बढ़ेइबो सेते sensitivity बढ़िबो. So potential difference बहुत low measure करी हबो. गोटे एग्जांपल दउची मन कर वोल्ट मीटर अछि पोटेंशियल मेजरमेंट करछ से 0.1 वोल्ट मु मेजरमेंट करिया को चाहूची 0.001 वोल्ट जेमिति तमे स्लाइड कैलिपर्स स्क्रू गज स्पेरोमीटर आर डिफरेंस कौन ऑर्डिनरी स्केल लिस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर स्लाइड कैलिपर्स लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट माने मिनिमम जते मेजर करी हबो लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर स्क्रू गज स्पेरोमीटर 0.001 सेंटीमीटर 0.0005 सेंटीमीटर. So for accurate measurement, we use different instrument. So this is an instrument which is used plenty of wires. आगे instrument बुझीबा तापर स्टोरी बतेइबा. So एटे जे स्केल अछि देखो स्केल एटी स्केल अछि थरे देखिनी आउ देखाबो नेटा स्केल अछि एटी सब ए जो ब्लैक लाइन गुडा देखुछ वायर देखो एटी वायर आरंभ देखो एमती जाईछि 100 सेंटीमीटर पुणे एटा 100 सेंटीमीटर एटा कपर स्ट्रिप साइड रे कपर स्ट्रिप अछि कपर स्ट्रिप लागिछि वायर दीटा देखो वायर दीटा भीतर गैप अच्छी मोर मुझे आम्प्लीफाइड फॉर्म देखी डायग्राम रे आम थ्योरी बाहर करवा. सो एटी गैप अच्छी देख एटी वायर स्टार्ट ला 100 एटू नियो एटू आरंभ कर एटा 100 पुणी गला 100 200 एटा 300 400 एटा 600 वाला 1 2 3 4 5 6 आउ दीटा लास्ट को टर्मिनल्स देख ये जो टर्मिनल दीटा यही टर्मिनल्स गोटे ए आ गोटे बी एटा आम्प्लीफायर फॉर्म रे देखैछि मु एटा ए एटा बी आउ आदर किछि नाही एत्तिकी मात्र बट वी विल सी हाउ टू मेजर इट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज दिस मच दिस द पोटेंशियोमीटर and it is used to measure the generally potential difference. That's why we call it potentiometer. It is an instrument only consists of several wires each of 100 centimeter placed parallel to each other fixed on a wooden board. Okay, now generally available potentiometer 4 wire 6 wire and 10 wires 10 wire माने 1000 centimeter हैला the 10 wire माने 10 meter तार को एमती लंबा रखिबा लाबटे धरबनी ताकू एमती रखा होइछि सेति गोटे छोट बोर्ड उपर तथापि बहुत बड़ एटा. सो दिस ब्लैक जो ब्लू रे डॉटेड मार्क अछि ब्लू लाइन देख एमती तीनटा क्लास रे हबो इंस्ट्रूमेंट ब्लू लाइन रे सेटा हला पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट. ओके किसी कनेक्शन है नहीं खाली इंस्ट्रूमेंट आउ दैट वायर इज मेड अप ऑफ रिमेंबर दिस वन द वायर इज मेड अप ऑफ मैंगानीन और कॉन्स्टेंटान जो मानकर अल्फाटा होची 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0 तांकर टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 ता माने कौन जदि टेम्परेचर चेंज हो इफ यू चेंज द टेम्परेचर either in the laboratory or the temperature of the instrument itself by connecting some battery current will flow it will be heated there will be no change in resistances alpha is equal to 0 temperature coefficient is 0 there is no change in resistances that's why this type of material are chosen for these wire उडा देखैली से wire टा एइथरे तयारी हवा दरकार से तैयारी होइछि कि नाही मु तो कहि परिबिनी कंपनी कहबा सेतले एक्सपेरिमेंट करिवा तार सेंसिटिविटी रु जणा पड़िबो. ओके ओवर पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज ओवर एटी स्केल अच्छी सो लेंथ रे आमे मेजर करि परिबा केवल आमको एठी नॉल डिफ्लेक्शन रा बैलेंस लेंथ दरकार जेमती मीटर ब्रिज रे कहितली विस्टन ब्रिज अरेंजमेंट कहितली सो बैलेंस पॉइंट दरकार जीरो डिफ्लेक्शन दरकार. सी नाउ एटा इंस्ट्रूमेंट सरी गला only 1 2 3 4 or 6 wires or 10 wires fixed wooden board and there is a scale a blue dotted line रे जो टाणी छि सेटला इंस्ट्रूमेंट. Now forget about this circuit. Now I am removing this circuit. पछे देखिया ये सर्किट पछे आसीबो ये लिबे देली बर्तन ये ब्लू कलर लाइन टा होची पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट. सो हियर यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट मु यूज कहूनी I am going for the explanations of the principle कौन प्रिंसिपल डिपेंड करछि for which formula we can adopt in various experiments that is so called the principle of the potentiometer. First question पड़े what is the principle of a potentiometer
I will write this principle in one sentence provided you follow this. At the end I will state that. So that here, so this is A, B are the terminals. जब देखैली एटी देखाउ तरे दीटा टर्मिनाल अछि आ तारटा अछि खाली तारटा एमती बुली बुली जाइछि बस सेइथरे हम गोटे करंट फ्लो करबा केमती. सो वी हैव टू अलाउ सम करंट टू फ्लो अक्रॉस दिस वायर्स. ये तळ सर्किट भूली जाओ बिका. सो एटा यूज रे आसीबो. नाउ हियर द रेड लाइन सर्किट देखा रेड सर्किट एंड रेड सर्किट is called as the primary circuit or auxiliary circuit. Now here तमे आर ये क्रॉस रे गोटे बैटरी लगेइबो जोटा कि आधरे करंट फ्लो करिवो. करंट मु बैटरी लगेइछि मते क्वेश्चन करि परिबो केई तो करिवनी भाबिछि करी माने कहबो हम तो ऑनलाइन डायरेक्ट पचारिबोनी डायरेक्ट हेले भी केई पचारिबोनी मते जणा अछि. सो एटा प्लस एटा माइनस तमें पचारि पार ये कौन गोटे आ दीटा लगे ये गोटे एपटे लगे सब दीटा लगे. रिमेंबर दिस वन इन दिस सर्किट which is the primary circuit, auxiliary circuit, and that circuit remains same whatever the use of potential may be in the laboratory. जो भी यूज हो ये रेड सर्किट टा मस्ट. सर्किट टा कौन खाली गोटे सोर्स दिया हबो करंट फ्लो करिया पई नथिंग एल्स. तो आम गोटे बैटरी लगे दबा तुम मत क्वेश्चन करें एपटे कहीं प्लस लगेली पचारे पचार पचर ये प्लस कहीं लगेली प्लस लगे दरकार उल्टिले हेनी माइनस लगे हेनी प्लस यू हैव टू कनेक्ट हियर दैट इज कॉल्ड एज जीरो पोटेंशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट. सो हियर इज बैटरी एंड जनरली गोटे बैटरी 1.5 वोल्ट विल यूज मोर देन 1.5 वोल्ट इन दिस सर्किट. जहाँ आर सर्किट रे यूज हम ताठू बेसी वोल्टेज आमको ये दरकार हम से बेसी देखी. नाउ हियर दिस अ पाथ यू सी ओनली कनेक्शन है खाली एटा कहीं लगी ना कि तो इच्छा हेले बैटरी लगेबू जो गपीब लाबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करबनी व्हेन यू विल नेवर डू द एक्सपेरिमेंट्स एंड जस्ट बाय सिटिंग इट इज नॉट एसेंशियल टू कंज्यूम द सेल ऑफ द laboratory. So to prevent this you can have a key, you can put it out, so circuit will be open. When you will do the experiments you close it, that side is connected, nothing else. तार किसी रोल ना experiment रे. So here is the ammeter. Ammeter is an instrument which is used to measure the current. So एइथरे जो current टा flow करूची एइटा measure करिया पई ammeter use करा होची. AMMET or ammeter A current measuring device. केते current देलो इट मापिबो. So here there is a resistance. What is the need of this resistance? This is a variable resistance. जदि fixed resistance कर देबी ताले गोटे fixed current जीवो मो इच्छा अनुसार मो एक्सपेरिमेंट करिबिनी. I am doing the experiment, I can change it. So if I use a fixed resistor, current will be fixed in the circuit. Now at particular instant I will fix it, but according to my choice. Kemti? Now here is a rheostat. Rheostat is a variable resistance and we have done two resistances. This is a fixed resistance, this is a variable resistance, और दिस इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये जो फैन रेगुलेटर वेरिएबल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करुची. सो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करुची बोली आना रियोस्टाट एठी लगेई देली रियोस्टाट सीधा एई पॉइंट रु एई पॉइंट रे गोटे बैटरी लागिवो आउ किछि नाही करंट फ्लो करिवो ये वायर रे करंट फ्लो करिया पई सेति काम. And that is called as auxiliary circuits or primary circuit, and primary circuit must constitute higher cell, higher battery, higher energy source in comparison to the secondary circuit which I will use in the next use. Now this is an arrangement. So I will write in one sentence. लेखिला बेले को गोटे सेंटेंस रे लेखिबो केमती ना a cell or battery is connected along with a key, an ammeter and rheostat across the terminals A and B of the potentiometer. Potentiometer मतलब दीटा टर्मिनल से दीटा नहीं कि बैटरी लगेइबो ए यात्रा रे लगेइबो यात्रा नुहे. दिस इज अ यूजफुल थिंग्स ओवर. आई थिंक नाउ आइडिया इज क्लियर. एटा को हम एक्सप्लेन करिबा अभी क्या. नाउ आधर करंट फ्लो करूची करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस वन. नाउ बिफोर गोइंग टू दिस पार्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट. सी छोटिया फॉर्मूला एक्सप्लेन मु फर्स्ट एक्सप्लेन करिया को टाइम नउची सेकंड एक्सप्लेनेशन जो यूज हबो फटाफट यूज करिवि. सो दैट हियर यू इमेजिन दिस ए वायर तो करंट फ्लो करछि रेड एरो देखो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शंस देखे दउची ए रेड पेन को नै थाओ समझते
सो दिस पॉजिटिव एटा पोटेंशियोमीटर ओआर एमती करंट बुली बुली जाऊँगी तो बढ़िया लगुच एमती बुली बुली जीव करंट एमती जीव करंट जाएनी बट आम भल लगे कहूँ एमती जीव एमती जाकि पुणी ये आसो यहाँ भूल हो एमती कौन जीव एमती जीवनी एटा माइनस अच्छी एमती आसो है एमती जीव से ओआर यही ओआर केवल करेन्ट जीव यहाँ ओआर गुड़ाक अच्छी पूरा कनेक्शन एपटे हो देख एपटे भी कनेक्शन से कंटिन्यू अच्छी ओआर पूरा कंटिन्यू ओआर 100 200 300 400 500 600 ये गोटे टर्मिनाल ये गोटे टर्मिनाल ये दुटा टर्मिनाल देख ये टर्मिनाल दुटा यहाँ गोटे यहीपटे नहीं कि सर्किट लगी बास तापर ये काठ बोर्ड को रखीदे पछरे सो हियर ना ए ओआर को देख ए ओआर करेन्ट फ्लो करुच्ची नाउ आई एम टेकिंग ए सेक्शन ऑफ द ओआर फॉर्मूला देखिबा सेक्शन ऑफ द ओआर एटा ओआर पूरा लंबा ओआरटा से 400 600 1000 ही था नाउ इट हैज सम एरिया क्रॉस सेक्शन गोटे पोर्शन नेली ओआर ओआर तो एते लंबा ना एते लंबा गोटे छोट पोर्शन नेली माने एती पोर्शन नेली सो दैट आर एरिया क्रॉस सेक्शन केते बुझु था ठीक से एरिया क्रॉस सेक्शन है ए मोटाटा एटा एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हैला ना मनकर लेंथ होची केते ना एल आउ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू v एट दी टू ए टर्मिनल 8 मनकर दीटा पॉइंट नबा दीटा पॉइंट रे पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन से नाउ हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज v लेंथ इज l कहलो एई पोर्शंस रो से ओआर रो एई पोर्शंस रो रेजिस्टेंस मनकर r इज इक्वल टू रो l बाय a एल इज द लेंथ ऑफ द ओआर पूरा ओआर नुहे गोटे पोर्शन नहीं मु जो आ भीतर सो एठी तो बैटेरी अप्लाई होती एथरे करंट फ्लो करिवो तो एठी करंट जाउची एटा रेजिस्टेंस ओआर रेजिस्टेंस अच्छी दुटा पॉइंट्स नहीं गली ये दुटा पॉइंट गोटे इमेजिन करछि गोटे पॉइंट ए गोटे पॉइंट बी आर गोटे रेजिस्टेंस अच्छी इट सडन रेजिस्टेंस करंट इज फ्लोइंग सो देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप v इज इक्वल टू आई आर ड्रॉप आ कहते वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन मैं जो वोल्टेजटा से ड्रॉप हम से क्या प्रोपोर्शनल बढ़िया रिजल्ट बाहर सो v r इज इक्वल टू रो एल बाय ए सो v इक्वल टू वोल्टेज यही पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई रो एल बाय ए इक्वल टू आई रो बाय ए देखु था ठीक से इंटू एल देखा जाउची आई ठीक से देखु था आई इज द करेंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस वन एटी करेंट जो फ्लो करंट रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओआर जो ओआर टा मनकर ओआर दिया है से ओआर मटेरियल फिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैव आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस आपको जब काटी टिक टिक कर देवी रो रिमेन्स अनचेंज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट तेणु आर रोटा कांस्टेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल ऑफ द ओआर ए ओआर टा मुझे एम्प्लीफाइड मोटा करी देखई ओआर इज सिलिंड्रिकल इन शेप तो ये v इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू रो एल बाय ए सो आई रो बाय ए इंटू एल आई है करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस वन रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओआर ए है एरिया क्रॉस सेक्शन आउ एल है लेंथ अंडर कंसीडरेशन मन कर जो लेंथ तुम नहीं देन see these parameters are constant will adjust in such a manner will adjust the rheostat in such a manner remember this one practical यही करिवो गोटे आगे करंट फिक्स करिवो जदि ऑब्जर्वेशंस नंबर इंक्रीज करिवो करंट को हमें चेंज करिवो गोटे करंट नबु एक्सपेरिमेंट करिवो करंट चेंज करिवो आउट एक्सपेरिमेंट करिवो करंट चेंज करिवो आउट एक्सपेरिमेंट करिवो दैट्स हाउ वी हैव यूज्ड द rheostat nothing else but current should be constant at the time of experiment for one observations so that current keeping constant rho specific resistance of the metal remaining constant a area cross sections of the OR remaining constant घसी घसी मोटा पतला हेनी यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन सो आपको भल लगी मन रख इंटू एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर तेणु तुम यही पोर्शन रे नियो यही पोर्शन नियो कि यही पोर्शन नियो कि यही पोर्शन नियो कि यही पोर्शन नियो कि 100 सेंटीमीटर नियो 150 नियो 180 नियो 200 नियो 250 नियो जहाँ भी लेंथ ता भीतर इमेजिन करो ये ओआर भीतर लेंथ कारण ये स्टार्ट होती एंड होती जिते लेंथ तुम नहीं पार ता भीतर
जिते भी लेंथ दियो इट इज वेरी ओबियस दिस फैक्टर इज ए कांस्टेंट यही फैक्टरटा कांस्टेंट सो हियर इज v so v is equal to kl I am writing this one you see this formula you should never forget आपको लिभेली ता माने मु बाहर कली से v potential difference across any two point of this wire any two point मु देखेबी को पॉइंट मोर डायग्राम रे मु जो पॉइंट देखैछि माने कर एई पॉइंटटा देखैछि एइटी स्टार्ट हैछि ए आ एइठी आस एम देख 100 आसिलो 100 आउ एटी 20 30 हबो जा हबो ए टू जे लेंथ मु ताकू लेखिबी तमे कहबनी मो ना रे मु जे लेखुची जे होची जॉकी की आउ से कीटा तो मु देखी से तुमको सेटा मु कनेक्शन अभी क्या करा हैनी जॉकी रो कनेक्शनटा एमतिया यू कैन सी आ सेटा आम हाथ आम मन इच्छा रहबो मु लेंथ ये आर लेंथ को चूज करबी नॉल डिफ्लेक्शन पाई एटी गाल्भान मीटर एटा वायर लागिवो एटा मो हाथ रे अछि मु जुआडा को मूव करेबी आ तो जुआडे मूव करेबी नॉल पाई एटी थोबी ए वायर ऊपर एमती खाली नाही ए वायर ऊपर पिला एठी देखि कहंदी करंट देखौनी ना आ ऊपर थइबो आ ऊपर सो लेंथ आसीबो मने कर गोटे लेंथ मु नैछि ए जे इमेजिन करो नाउ हियर v इज इक्वल टू kl भल कि देखु था के कहा पाई मु पुट करछि आई रो बाय ए इंटू एल देखि पारछ आई रो बाय ए इंटू एल आ पाई ए जो बुला है ता पाई के बसा है तो आकु टिके इक्वेशंस 1 दबा होयार के कहा पाई बसैछि आई रो बाय ए रिमेंबर इट इज ए कांस्टेंट आ से कांस्टेंट रोल बहुत बेसी एठी देखिलो आई रो बाय ए तमें लेंथ से वायर लेंथ चेंज करी मु मन कर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रेंज नेली रेंज 10 20 30 40 एटू स्टार्ट कर तमें जहाँ नियो अधा नेले 50 पूरा नेले 100 पुणी अधा नेले 150 एमती बुलिक आसो 150 200 250 300 350 400 है जहाँ लेंथ नब आ ये फॉर्मूला कहूँ v प्रोपोर्शनल टू लेंथ बुझी पाइल दिस रिमेनिंग कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर करंट पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर ए this is constant so v proportional to l that means if you plot a graph this is a question remember if you plot a graph for various length of this conductor for various length potential difference will be proportional to length so graph will be a straight line this is very important short question remember then we observe that this k v is equal to some constant into l k is equal to v by l आर माने कौन फिजिकल माने कौन पोटेंशियल बाय लेंथ मु जो रेंज नहीं थी ये डायग्राम देखई मु डायग्राम एमती देखई अबिका तो मु गोटे रेंज नहीं थी एटी पोटेंशियल एल v by l ऑफ दिस वायर ये गोटे वायर तार गोटे रेंज नहीं मु रेंज गोटे रेंज नहीं सो पोटेंशियल डिफरेंस v लेंथ हो l सो v by l रो अन्य ना तुमको आगरु जना अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रु आकु कहंती पोटेंशियल ग्रेडिएंट कौन कहंती पोटेंशियल ग्रेडिएंट सो k is potential gradient and remember k is constant and k is the this is if you take this v by l this is v this is l so slope is constant so k is constant and remember for this instrument under consideration for a fixed amount of current again you listen it for a fixed amount of current in a wire having fixed area of cross section घसी मोटा पतला ही परिबनी घसी पतला कर दबनी having fixed area of cross section rho is fixed area of cross section this k is constant k is called as potential gradient and v proportional to length l jadi so this I think you should remember this one so this is the principle now in principle I have written pachari what is the principle of potentiometer then you proceed for any use principle conclusions lekha achi it is based on the principle that remember this
दिथर मु कहूँ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आई थिंक एथे ट्वाइस रे किसी मीनिंग ना बिकॉज यू कैन रिप्लाई इट एंड से 3 times 4 times 5 times नाउ द फिक्स्ड इज फैक्ट कौन फैक्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across this potentiometer where is at any two intervals जेकोन दिना इंटरवल ले is directly proportional to length जेमती तमे पढ़ी थिलो गोटे OR रो resistance proportional to length more the length more is the resistance V proportional to L सो एल बढ़ी बढ़ी चलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी ता भितर बढ़ी बढ़ी चलो ता माने जदि ए जे पॉइंट मन यही पॉइंट रे पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ अच्छी लेंथ बढ़े गले ठीक बढ़ीगला आउर बढ़ेदेली बढ़ीगला सेटा केमती केमती जानिबा ना नल पॉइंट रू एक्चुअली जानिबा बट दिस इज द प्रिंसिपल आई थिंक फर्स्ट यू फॉलो द प्रिंसिपल एटा मु डिराइव करिछि ए ग्राफ भी शॉर्ट क्वेश्चंस आउ केटा को जो केटा मु नेली के इज दिस मच आई विल यूटिलाइज दिस वन एटी गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पचरा जाई पारे हाउ कैन यू मेक ए पोटेंशियोमीटर टू बी वेरी सेंसिटिव माने बहुत लो वोल्टेज मेजरमेंट करि परिबो बहुत कम वोल्टेज मेजरमेंट करि परिबो बहुत कम वोल्टेज मेजरमेंट करिवो जेते लो वोल्टेज मेजरमेंट करिवो सेते सेंसिटिव एटा किछि पढ़िया दरकार नहीं जेते कम वोल्टेज माने लिस्ट काउंट माने करो लेंथ मेजरमेंट करिवा लेंथ मेजरमेंट करिवा गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि 0.1 सेंटीमीटर तले मेजर करि परनो स्केल तो आम स्लाइड कैलिपर्स हेल्प नौ 0.01 सेंटीमीटर मेजर करछु ताठो आउरी कम दरकार स्क्रू गज नेउछु स्क्रू गज इज सेंसिटिव देन स्लाइड कैलिपर्स इज सेंसिटिव देन ऑर्डिनरी स्केल माने मोर एक्यूरेसी इज देयर तेणु वोल्टेज एक्यूरेसी मेजरमेंट करिया पाई तुमको कौन हम ना जिते कम लिस्ट काउंट दरकार तुमको सेंसिटिव हम इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव हम जदि लो वोल्टेज बहुत लो वोल्टेज मेजर करि लो वोल्टेज केतळे मेजर करि के लो हम ता माने के लो हम पोटेंशियल ग्रेडिएंट लो हम देखिल एटा लो हम एलटा हाई हेले बुझीपाल आउ तार शुणी सार इट विल बी मच मोर सेंसिटिव व्हेन वेरी लो वोल्टेज कैन बी मेजर लो वोल्टेज मेजर कले कौन हम ना ये सेंसिटिव हम कम वोल्टेज मापी हम मेजरमेंट करी हम तेणु यहाँ केतले लो हम ना के जिते लो हम के केतले लो हम ना V बाय L अच्छी लेंथ हाई हम ता माने यही जो तारटा लगी जो वायरटा लगी जो पोटेंशियोमीटर वायर जिते बड़ सेटा सेते सेंसिटिव तेणु 4 तुम पचरा जीव 4 वायर वाला पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव ना 6 वायर वाला पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव ना 10 वायर वाला पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव रिमेंबर दिस 10 वायर वाला पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव देन 6 वायर देन 4 वायर्स बट इन योर +2 lab it may be given 6 wires it may be given 10 wires sometimes whenever we are failing in the experiment in the lab we use the sensitive instrument 10 wire potentiometer okay and 10 wire potentiometer will get very nice result 6 wires also we can get but more sensitive is 10 wire jette length बढ़िबो सेते potential gradient low हबो potential gradient low हेले low voltage measure करी हबो so that is the principle of this type of instrument and this principle you can utilize to use it first मन रखा लिखी भी क्लास first to measure the voltage is very simple second to compare the EMF of two cells dita cell दिया हबो EMF compare करिवो that is in experiment another गोटे cell दिया हबो to find the internal resistance of the cell so the internal resistance तार अछि we can calculate with this instrument okay with this in the next we will go proceed for the use of this potentiometer for various purposes a versatile instrument versatile माने बुझछ तो versatile माने विभिन्न पर्पस पय यूज हुए पचारिबो वोल्ट मीटर और अमीटर रे फरक कोन फरक माने डिफरेंस वोल्ट मीटर और अमीटर रे फरक माने डिफरेंस कोन वोल्ट मीटर only measure the voltage potential difference but this is an instrument which can measure the voltage which can used for comparing the EMF
which can be used to find the internal resistance of a cell which cannot be determined by voltmeter. बट एडवांटेज आम कहीं वोल्टमीटर यूज करूँ वोल्टमीटर देखा लास्ट क्लास जो गाल्वानोमीटर देखी वोल्टमीटर सेमतिया देखा छोट पोर्टेबल उठे नहीं हम बट दिस ए वेरी लार्जर इंस्ट्रूमेंट यू कैन यूज विथ ए experimental purpose to calculate very low sensitive low amount of voltage that is called as when we need low least count माने least count minimum measurable quantity तेणु जिते minimum मापी हम सेते sensitive. Okay, next we'll go for the other uses of potentiometer. We'll complete it within 2 classes. Okay, thank you all.